constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Hopefully I am audible to you all. Audible, right? Now tell me, Viraja, you tell me, ये क्वेश्चन रो इंट्रोडक्शन मु भलो रे केमते लिखिबी? Viraja, yes sir. इंट्रोडक्शन दा केमते लिखा होगा? Sir, sir judiciary start हो. Okay. हाँ. Sir सुनो जी. हाँ हाँ. sir judiciary start हो जे judiciary रो significance टा लिखा हो, article ना भी लिखा हो. कितना आर्टिकल? Which article? Sir Supreme Court रो 124 रो 147 और High Court रो 220 रो 230. The question is on judicial independence is a prerequisite of democracy. खाली judicial independence का intro नुहा. Judicial independence का केमती prerequisite of democracy say it also intro. I am not very much interested in articles in my intro. ताले मु body में ताले कौन लिखी मु intro में article में interested नहीं. Introduction होची मु body रे कौन लेखिया पे की जाऊची मु तारो गोटे कौन देबी आगो ना झलक देबी. Hence, introduction will be judicial independence is a prerequisite of a democracy. ताले exam hall भीतर बसेगी केमती भावंती इतने basically you need to address prerequisite of democracy. You need to think first within few seconds what are the prerequisites of a democracy. Just wait. What are the prerequisites of a democracy? For that you need to have the concept what is a democracy. Now tell me first what is a democracy. Shobha or Viraja, anyone, Arpit, what is democracy? Sir, democracy is people's participation. Okay. In the governance of a country. Okay. So democracy is a form of government where people have basic rights guaranteed to them, and there is no authoritarianism. Okay. Democracy means demos plus kratos. Demos means people, kratos means rule. It is people's rule. लोक ताको पाई जेतले रूल करिवे जेतले गोटे जिंस मु मो पाई करिवे भलो ही करिवे ना. I will do something good for me. When the society will create a law or anything, it will be good for the society. When a nation will create a law or anything, it will be good for the nation. This is the essence of democracy. भलो गोटे करूची सेटा socially acceptable हेइथर अछि. Whatever is socially acceptable, that will get legalized. Hence, that will become a law. So the prerequisite of a democracy होउची कोन ना लोकंकर भलो होथो. लोकंकर भले कोन जो preamble तोर जदि मन अछि. Hence, democracy ऊपर क्वेश्चन आसिला मात्र के understand, remember the terms of the preamble that will get imbibed in your introduction part. Justice, equality, liberty, fraternity, से सब जिनस गुरा को justify करि परिबो जदि judicial independence थिबो, separation of power होथो. This is the way to write the introduction of it. The question was not only of judicial independence. Most of you has written the introduction to be wrong. If not wrong, rather substandard. Prerequisite of democracy. For democracy आसिले आगो मन पकेबु preamble. Preamble ले से सब needs गुरा अछि. ताकू justify करिवो कि ना judicial independence. So this will be my introduction. Articles I am not very much interested in the intro. Hence will come to the body. Body रे हमें कौन देखियो ना constitutionally guaranteed judicial independence. जतरा कौन करे माने हमें judicial independence देखौछु. Rest of the things you have written in a better way. Introduction at our trouble thila.
For that, you know about the security of tenure. I do not want to teach the complete polity now. Security of tenure तमे जानिचो, impeachment process कथा तमे जानिचो अगुरु. That is not truly impeachment. That is more or less removal of the judges. But impeachment बही लेखुची, so we are also saying it. So rigorous impeachment process. So there is a financial independence, which you very well know. I don't need to explain over here. Autonomy in administrative service. So जिनसर तमे अगुरु जानिचो. More or less तमरा answer पे एक part टा ठीक भी थिला. Check on power, you very much know well about judicial review, protection of individual rights, article 13. हमें सारा सब जानते से पार्ट टा ठीक है, right? आपरे कौन हमें कौन लिख परिया ना challenges to the judicial independence. पचारो साथ सेटा तो question ने लिखी नहीं. Question पचाची constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. से तापर लिखी ची critically analyze, discuss, comment. ताले तारा आउ गोटे dimension होची judicial independence को किसी challenges अच्छी की तारा आउ गोटे heading दिया हो. Intro दिया हला constitutionally guaranteed लिखा हला. तापर सेप्टा कोण ना challenges कोण हे परुची judicial independence को. अरे तू challenge लिखी दबु तू तापर फोर्स एबलो तार सॉल्यूशन भी दबो. Way forward दबो. Remember this format. Never end in a negative way. Once you have written the challenges, which you know very well, politicization of judicial appointments, lack of adequate resources, overburdened judiciary, this, that and all, तापर तू तारो way forward दबो. A way forward is the substantiation part more or less. 82 examples दबो. Commissions ना लिखिबो, committees ना लिखिबो, कौन करियो तो लिखिबो. Let me tell you, while writing the way forward part, do not think कि ये कामटा करी हबनी. To idealized answer लिखि परियो, जोटा कि practically possible बोध में न हे थे पारे. जेमति लिखिबो कि the separation of power should be complete. गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी भीतर पसिया कथा नुह सेमति किसी होउनी. किंतु एमति तू लिखि आसु लिखि आसले मोर चले. More or less answer which you have written was up to the mark. Only trouble you had in the intro part. And Shobha, the trouble with the facts. Fact हमको मिलिबो कोड. मु क्लास रे भी कहितली. गोटे national player रो टेस्ट पेपर पढ़े. National player I'm saying on record here. Vision रो टेस्ट पेपर उठा ताको पढ़े ता फैक्ट फिगर लेके ए टाइप रो क्वेश्चन ने ए टाइप रो आंसर होची. ब्रेन को ट्रेन करार अछि. Rest of the things will be written by everyone, so no big deal in it. अब मो पर जहां फैक्ट फिगर अछि बहुत जल्दी क्लास ने की तुम सेटा दे दिया जीवो. And the first question was quite simple. I do not need to waste more time on it. First question ना कार किसी डाउट अछि. Intro was the only trouble. Intro been handled. Any doubt in first question? sir सर डाउट थिला जे सर एटा जदि हमें जो इंटरनेशनल बेसिस से कंपेयर कर परिया जुडिशियरी माने जेंति अमेरिकन जुडिशियरी कर परिया अभी परियो जे हां हां कर परिया. हम एटा भाबी नथल से तळे एबे बाबू हबो. See, in the main question, you have all the freedom to write, provided you are justifying the question. Justify करछु तल हबो. Yes. Can that be done? Yes, that can be. But judicial independence. Clear? Now, US way of judiciary, French way of judiciary is different from that of the Indian way of judiciary. Yes, sir. सेठी confusion है कि भूल भाल को पता चल रहा. So hopefully your optional is PSIR. You should be in a position to do that. Yes, sir. If we come to the next question is a beautiful one. The Constitution of India safeguards all citizens individually and collectively. I repeat, the Constitution of India safeguards all citizens individually and collectively. The introduction ठीक ठाक था तमरो. Agreed. तमे ठीक कोन गोटे भूल कलो. तमको मु कहितली कि प्रति क्वेश्चन को सेपरेटली क्वेश्चन न प्रति पार्ट को सेपरेटली एड्रेस करियो. तमे एक कामटा कलो. Agreed.
आई होप यू हैव सीन इट तू तले कलेक्टिवली को एड्रेस करछु तापर इंडिविजुअली को एड्रेस करछु आंसर ओवरलैप कर जाउछु फंडामेंटल राइट्स भितर कलेक्टिवली भी सेफगार्ड कराउछि इंडिविजुअली भी कराउछि डीपीएसपी भितर भी शेयर होछि इमरजेंसी प्रोविजन रे भी शेयर होछि ताले जोठी क्वेश्चन ओवरलैप करिवो ताकू जबरदस्तिया सेग्रीगेट करके लिखियार नाही इंट्रो दलु तापर सीधा लिखिबु सेफगार्ड्स ऑफ सिटीजंस इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सेटा गोटे हेडिंग दलु ता भितरे डायमेंशन काढिबु नहले आंसर वाला ओवरलैप करिए छि तमरो ओवरलैप पे मार्क कटा हो काहे ना तोर कोहेरेंस नाही जदी ओवरलैप न करिबु परे ताल तोर आंसर इम्परफेक्ट हे जो ता पई के भी कटा हो तनु कर एथे जे तू ओवरलैप हे जीवो तनु कर हमें गोटे हेडिंग देकी ता तळे डायमेंशन तक लिखिया This is what is called as answer writing practice. Necessarily नुह कि क्वेश्चन टाको मु सब थरक भांगुथिबि एठी ओवरलैप होछि मु तो भागिबिनी मु गोटे हेडिंग रे ताको करबि ना लिखिबि सेफगार्ड्स ना कोन सेफगार्ड पढला मात्र के किछि मन पडो न पडो लिखिबु फंडामेंटल राइट्स तापर लिखिबु डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स 12 ରୁ 35 पूरा लिखियार नहीं 6 टा टाइप रो फंडामेंटल राइट्स अछि सीधा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सीधा लिखियो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ब्रैकेट रे पार्ट 3 1 2 3 4 5 6 करके 6 टा टाइप रो जो फंडामेंटल राइट्स अछि ताको लिखियो साइड रे तार आर्टिकल लिखियो 14 ରୁ 18 19 ରୁ 22 32 एंड रे बुझला 25 ରୁ 28 ताको लिख दलु तापर लिखियो सीधा आसे कि डीपीएसपी सेफगार्ड पचार छै ना डीपीएसपी आसिला मात्र के जोठी डीपीएसपी पडिबो तार गोटे माने गोटे अछि फ्रेमवर्क नॉन जस्टिसेबल दे गाइड द स्टेट इन लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी डीपीएसपी आसियो मात्र के लिखियो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ब्रैकेट रे पार्ट 4 hyphen non-justiciable tatole they guide the state in the making of laws and policies जोड़े तीनटा डीपीएसपी तोर एनी टाइम मन रहिथिवार अछि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स जतक आर्टिकल मन रखि जा जतक एटलीस्ट लिखि आसीबु ना कोन आर्टिकल 38 आर्टिकल 39 रेस्ट ऑफ द डीपीएसपी हमें करियो आर्टिकल 38 ना कोन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ स्टेटस एंड opportunities सब आर्टिकल रो गोटे लाइन मन रख देकी जाइथा एटा प्रीलिम्स नुह कि मु पूरा मन रखी जीबी एटा मेंस मो पर एते वर्ड्स नै कि समय नै आर्टिकल 38 रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एटा आउ कोन कहबो ना प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ए टाइप रो गोटे लाइन मन रखी जा दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन आर्टिकल 38 आर्टिकल 39 कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ यूथ्स एंड चिल्ड्रन जोड़ा मन रहला आगे लिखलु फंडामेंटल राइट्स तापर लिखलु डीपीएसपी रो जोड़े चारटा वर्ड्स रे नॉन जस्टिसेबल गाइड द स्टेट से सल्ला जोड़े आर्टिकल लिखलु आर्टिकल 38 आर्टिकल 39 तार गोटे वर्ड तार गोटे लाइन तीनटा चारटा वर्ड रे तीनटा चारटा वर्ड तक सान तापर कोन तापर पूर्ण थरे रिपीट हो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल protection protection against the discrimination हमें पूर्ण थरा आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 को आसिल तो सर नाउ इट इज द थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड नो एथा एथि में लिखिली कारण मु एने रिजर्वेशन विषय लिखिली स्पेसिफिकली ना कोन ना कलेक्टिवली हमें एससी एसटी ओबीसीज एंड इवन इन सम केसेस वुमेन मानक पई के भी स्पेशल राइट्स को हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पेज रे करि परिबु आंसर रिपीट हेलानी हेडिंग टा रिपीट हेई थई पारे जला then we will write about the minorities and linguistic cultural rights to कहू सर आर्टिकल 29 30 रे para we have written it before agreed पूर्ण था लिखियो आर्टिकल 29 30 तापर आउ गोटे आर्टिकल हमें मिस कर दियो जोटी आर्टिकल 350 ए सेठी पई कि मु आ गोटे हेडिंग दोउची मु आर्टिकल 358 को इनवाइट करिया पई आर्टिकल 358 टा कोन ना पिला मानु को तांको मदर टंग रे एजुकेशन दिया
बुझला ए क्वेश्चन में आंसर रिपीट होची आर्टिकल 350 ए पे कि मु पूर्ण था लिखिले गोटे हेडिंग प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक कल्चरल राइट्स खाली सेठी लिखियो आर्टिकल 2930 ना कोन ना द फंडामेंटल राइट्स आठटा कोन लिखियो ना आर्टिकल 350 ए तापर पूर्ण था कोन लिखियो ना सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स हमें आगुर लिखिछु आर्टिकल 25 टू 28 तापर लिखियो emergency provisions part 18 emergency रे लागिवो 44th amendment act you know this very well article 20 और 21 को सस्पेंड करी हबनी सेटा भी कोन करछि ना कॉन्स्टिट्यूशनली तुमको से सेफगार्ड करछि लास्ट emergency provision ना मोर और लेस कही लिखिलोनी I hope you are getting what I am saying. Are you getting how to frame the answers of it? दो तीन थरा लिखले तो रही जिवो बुझला एथरे पिलाकर इंट्रो ठीक थिला बॉडी पार्ट टा वीक थिला बुझियोची सेकंड क्वेश्चन टा को हैंडल केमति करिवो यस सर अर्पित यस सर शोभा I repeat फंडामेंटल राइट्स जोठी पडिवो सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स सब तो लिखिया नै 6 टाइप रो लिखिया अछि डीपीएसपी पार्ट 4 नॉन जस्टिसेबल दे गाइड द स्टेट इन लॉ मेकिंग इंशाल्लाह तापरे जोडे आर्टिकल लिखियो तीनटा चारटा वर्ड तो सारियो जोडे आर्टिकल तापरे इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज पे की तापर लिखियो आर्टिकल 350 ए सेक्युलरिज्म प्रोटेक्शन इमरजेंसी प्रोविजंस यदि एते न मन पड़ची हेले भी चलियो खाली बॉडी रो फ्रेमवर्क ता ठीक ठाक हेगी थिवार अछि यू विल गेट appropriate marks to it. The next question is evaluate the challenges of Panchayati Raj institution in India. What are the measures needed to strengthen the PRI in India? Fundamental rights पढ़िबो तार इंट्रोडक्शन आगुरु प्रिपेयर करी रखे डीपीएसपी पढ़िबो इंट्रो प्रिपेयर करी रखे नाउ टेल मी ओपन अप योर माउथ अनम्यूट योर स्पीकर एंड टेल मी ऑन पीआरआई ऊपर क्वेश्चन पढ़ले मु इंट्रोडक्शन कोन लिखिबी सर मोर decentralization ओके सर मोर होचे प्रिंसिपल ऑफ subsidiarity ओके देन yes sir which says that sir do you elaborate sir principle of subsidiarity says that what should be done at a particular level should done at that level only not higher or lower level than that that is the basic premise of Panchayat Raj institution in India. Okay. Until then, your voice is not audible, Shobha. It's not audible. Okay, fine. See. Arpit, go. So democratic decentralization तापरे सेतरे रही जीवो 73rd amendment act और माने subsequent development of rural India हला ठीक है एग्रीड तापर पड़छि इवैल्यूएट द चैलेंजेस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंट्रो मु लिखली तापर से नेक्स्ट क्वेश्चन होछि सॉरी क्वेश्चन होछि इवैल्यूएट द चैलेंजेस मु से इंट्रो रो नेक्स्ट लाइन लिखिबी but this glorious institution has got various challenges too तापर सीधा आसीबी कैप से लिखिबी challenges ताकोटा घर बनेबी माने कोन मु डायरेक्टली ताको देखौची challenges कोन इंट्रो गोटे मोर फिक्स थिला म तो देखिली क्वेश्चन पचाची challenges कोन this glorious constitutional institution has got various challenges too तापर सीधा आसली तळे लिखली challenges रो now tell me
Now I'll tell you something, just listen. Panchayati Raj institution विषय तमे न भी जदि पढ़िଛ, you can write it in a very better way. Understand practically. Election जोठी भी democracy अच्छी वर्ल्ड रे, election system is a very expensive system. Let it be US. Corruption सबुठी अच्छी, बहुत टका खर्च हुए, पंचायत इलेक्शन में भी बहुत टका खर्च हुए, मर्डर टू नेकी एनीथिंग हाईली पॉसिबल. जो मैंने आश्चंती सेठी की इलेक्ट है कि if not all, many of them have given money to the people. ताकू जो टका इलेक्शन में हमें खर्च करके आश्चंती ताकू ने टका दरकार है, एरा किछि लेखा होनी. एगर हमर बेस बनेबो चैलेंजेस को. Hence जे गोटे आउ हमें जानिछु 73rd अमेंडमेंट रे तीनटा लेवल रे अछि, गोटे विलेज लेवल रे, गोटे इंटरमीडिएट लेवल रे, गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे. सबुठी टका खर्च करके लोक पहुंची छथि. तेणुकर से टका काढ़िया ପାଇଁ चाहिबे. करप्शन मिसमैनेजमेंट विल बी ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. एटा मु एथि ପାଇଁ बुझेली कारण या पर ओटा अन्य टाइप रो क्वेश्चन रे बनै होउची, किंबा एस रे भी एटा हमर यूज हे पाउची, किंबा सोसाइटी रे भी एटा आसी परिबो. हमकु ओवरऑल एग्जाम क्लियर करिया अछि. आ पेपर 2 रे सोसाइटी पार्ट का कोन थर अछि, सोशल इश्यूज एंड जस्टिस रे. तेणुकर करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, करप्ट मिसमैनेजमेंट जाने सुनी के करी हबो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस. आउ कोन सिमिलरली इलेक्शन सिस्टम होची स्टेट को भी, सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट हे की बसची. समस्त को टका दरकार है. धर गोटे प्रोजेक्ट आछि 30 लाख टका रो, धर 30 लाख टका को ताकर कैलकुलेशन होची एमिति कि 30 लाख टका रु केमति किछि काम होबनी, 30 लाख टका रु परसेंटेज निया हो. एमिति नुह कि 30 लाख टका रु 20 लाख टका काम हे साला पर 10 लाख टका बढियो माने सेथुरु करप्शन हो. सेमति होनी. करप्शन करी 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 जाई साला पर कॉन्ट्रैक्टर पाखरे निजो को लास्ट को बळौची 5 लाख 10 लाख टका, 5 लाख टका 8 लाख टका रे काम हबनी, कॉन्ट्रैक्टर ताकू बिका दिउची. सो मेन कल्प्रिट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टर बट द सिस्टम एज ए करप्ट एज ए होल. तेणु करी जेतु समस्त टंका दरकार पड़ुची, स्टेट गवर्नमेंट ताकू फंड दउनी, ये फंड नेले भी काम करूनी, ब्यूरोक्रेसी रो इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहुची, सी भी ताकू छाडुनी. समस्ते एवरीवन इज विलिंग टू टेक ए पाई फ्रॉम दिस करप्ट सिस्टम. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आमे याकू भलो भलो वार्ड देकी लिखिबा. स्टेट गवर्नमेंट चाहिथिले ताकू टंका तळू से फ्लो करि दी परथांदा, से करूनी. याको पाकू टंका आसिले भी माने काम करूनांती. ओके, now as a bureaucratic student you should be in a position to give this all these problems a beautiful positive sense of word. That's it. Now pratham kon challenges na lack of financial autonomy माने कोन से डिपेंडेंट रहुचंती सेंट्रल गवर्नमेंट उपरे आ स्टेट गवर्नमेंट उपरे ताकर सब काम करिया पई की. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोन पई दोनी ना यू नो बेटर, किंतु तमे सेंति किछि कोन करिवनी लिखिवनी. डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फंड्स एलोकेशन इनसफिशिएंट रोची, इरेगुलर रोची, ब्यूरोक्रेसी मानकर इंटरफेरेंस रहुची, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. as officer manaka nature you know better, hence they behave in a very supremacy way. यार पॉजिटिव वर्ड द्वारा खाली लिखा हो, ब्यूरोक्रेटिक रेटिफिकेशन, ईगो सेंट्रिस्टिक ब्यूरोक्रेसी, more interference in the work of the PRAs, lack of financial autonomy, dependency on the central and state devolution of fund. ताबादरे लिमिटेड पावर तांको पकड़े छ. कोन ना स्टेट गवर्नमेंट कहइबो कि से माने कोटी कोटी टैक्स लगे परिबे, स्टेट गवर्नमेंट तांको जान सुनी दोउनी. बुझियोची ना यू नो व्हाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हबो आउ डायनास्टिक पॉलिटिक्स अछि. I do not need to explain you all these things. You are very much mature and grown up now to understand. आउ कोन challenges यार ना gender inequality अछि. माने agreed with the fact there is 33% reservation for women, but there is a concept of sarpanch pati or pradhan pati.
means women elect हे साला पर भी ताकर husband माने more or less काम करछंती माने more or less women कर सेतरे भल पार्टिसिपेशन थिला पर भी more or less the things are not in a very good shape. Inadequate capacity building and training ता माने होचे या good तले जणे with all due respect, if not all, many of them. The same condition is with the legislative assemblies of the state also, and even in the parliament also. बहुत लोग जानी नहांती जो माने elect है कि भी बसचंती, and that is practical also कि governance structure टा केमती चलिवो. Financial management is not a small thing. Financial management केमती हो ताकू जाननांती. Implementation केमती हो of policy ताकू भी जाननांती. Understanding of governance they do not know. Corruption and mismanagement I do not need. Explain. Weak oversight and accountability. Next point is this: weak oversight and accountability. माने auditing होनी, monitoring होनी, diversion of fund होची, inefficiency in project implementation अच्छी, failure to enforce accountability अच्छी, inadequate devolution of power अच्छी. You know damn 500 points in it. You just need to write 5. That's it. बुझला? जदि तू जानिचु या प्रॉब्लम होची, truly now you know the back story. Back story कोन ना इलेक्शन हेची, करप्शन हेची, टका खाइचंती, स्टेट इलेक्शन में भी हेची, नेशनल इलेक्शन में भी हेची, पंचायत में भी हेची, ब्यूरोक्रेसी भी खाउची, समस्त टका दरकार. एटा तू जानचु कोन ना कवर पेज. तेथर ताले कोन होची हैंड्स. Challenges कोन रहला? Lack of financial autonomy, limited power and function, टैक्स लिवाई करिया पे कि ताको पर पावर भी नहीं तो ताको पर फंड भी नहीं. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अछि. पंचायत इलेक्शन द मोस्ट ब्रूटल इलेक्शन. नेशनल इलेक्शन पंचायत इलेक्शन आगे किछि नो माने गा साई ए घर से घर मरामरी कटाकटी सेथरे कम हुए ना सब हुए सेथरे. द मोस्ट ब्रूटल इलेक्शन इन इंडिया आर द पंचायत इलेक्शंस. Gender inequality achi, all these things. You do not need to write all the things which I am saying. Simply use your common sense. Under this background, write 5 points. All the 5 points are valid for you. Next, come to the measures. तो जहाँ problem लिखिलो तो तारा उल्टा उल्टा लिख. सेठी financial autonomy नहीं, एठी financial autonomy दियो. 73rd constitutional amendment को ठीक रे implement करो. सबु स्टेट रे पंचायत राज सिस्टम टा यूनिफॉर्म करो. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करो. केमिति छाड़ खाली तू लेखि गया हबो न हबो तू छाड़. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हबा कथा लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर कुड बी ट्रांसफर टू द पीआरआईज. सब तू सेठी कहलु कैपेसिटी नहीं और ट्रेनिंग ताको दिया ना. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग दियो. केमिति छाड़े. जदि स्पेसिफिकली गोटे क्वेश्चन पडुची ताहाले तू लेखि आसी ना केमिति आबो विल डील विथ इट. एड्रेसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस केमिति छाड़ खाली तू लेखि के आसे से पॉइंट ता. एड्रेसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मो पे स्पेस नहीं कि टाइम नहीं. ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन हवा कथा केमिति तू छाड़े. एक क्वेश्चन रे केमिति पचन न खाली तू लेखुछु मेजर्स कैन बी टेकन. दैट्स इट. खाली लिखि गया 8 पॉइंट एग्जांपल देई हो जला. स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन केमिति धर एटा पड़ी गला क्वेश्चन रे. पंचायत रे इलेक्शन रे 33% रिजर्वेशन थिला करे भी वुमेन मानकर रिप्रेजेंटेशन करा आर्टिफिशियल. चैलेंजेस को मेजर्स को मेजर्स से कोन ना पूरा चलला पुंथर ट्रेनिंग दवा कथा, एजुकेशन दवा कथा. 5 पॉइंट नॉर्मल पॉइंट्स थिंक एंड राइट. एड्रेसिंग कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स. पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेस को काउंटर करिया कथा. कम्युनिटी सेंसिटाइज्ड होबा कथा. बुझला. जेंडर इक्वालिटी आनिबा कथा. द चिल्ड्रन should be taught on this. This is a general studies paper. General studies paper ra 20 टा का क्वेश्चन तू करि गेसु. Plus this has got general answers.
improving transparency and accountability केमती ना गप पुनः स्टार्ट हेलो ना गप ना हाँ ना केमती ना एमती ना सर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडीज रहया कथा केमती रहबा तू चाहे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडीज रहया कथा सोशल ऑडिट हवा कथा आउ अकाउंटेबिलिटी रखिया कथा किछि कोड न मन पड़ले ना कोन ना सभा किछि कोड जदि न मन पड़ियो ग्राम सभा रे अकाउंटेबिलिटी हवा कथा किछि कोड न मन पड़ले टेक्नोलॉजी यूज करिया कथा ऑनलाइन कर दवा कथा टेंडर तक ऑनलाइन ही करिया कथा आउ आरटीआई एक्ट को आहुरी माने भलो रे इंप्लीमेंट करिया कथा रेगुलर ऑडिट हवा कथा पब्लिक रिपोर्टिंग हवा कथा एनीथिंग जोटा हवा कथा कॉमन राइट इट Are you getting what I'm saying? Buji. So, the things are truly easy when it comes to GS. Provided सेमन देखुचंती कि तू ग्राउंड रियलिटी जानी कि भी तू ताकू गोटे पॉजिटिव सेंस से लिखि पारुछु दैट्स द होल थिंग चला नेक्स्ट क्वेश्चन रेड मोर और लेस एक क्वेश्चन दा तमरा ठीक ठाक थिला नेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजंस प्रथम पार्ट स्टार्ट हला क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजंस गोटे हेडिंग लागो प्रोविजन ताले एंड एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन आ गोटे पार्ट ताले रहबो कार ना एक्सटेंट रो अच्छा ठीक अछि क्वेश्चन ऊपर टिक मार दो होला प्रोविजंस गोटे हेडिंग यार दिया हो extent of financial devolution और दिया तो क्वेश्चन पड़े financial devolution of powers provided by constitution of India to PRIs आउ गोटे क्वेश्चन आसला PRI पंचायत मु लोकल बॉडीज कहनी कमिटरू कि जन लिखला खाता टेस्ट चेक कला बेलू से ना कोन लोकल बॉडीज से स्पेसिफिकली पचरची पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कथा को हेंस PRA आछि माने पंचायत माने आर्टिकल 243 थ्रू 243 ओ देखाला तो ना कोन प्रोविजंस एंड एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डिवोल्यूशन ने तो जो ताकू दिया हो टका तार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की को माने कोन अछि माने PRAs माने को टका केमति मिल परिबो आर्टिकल 243 रु 243 ओ भितर से रहइबो धर तोर आर्टिकल मन नाही धर किंतु एटा मन थिबा कथा किछि प्रथम लेखा बॉडी रे फर्स्ट पॉइंट वुड बी स्टेट फाइनेंस कमिशन सही कहइबो ना सही कहइबो स्टेट को तापर स्टेट गवर्नमेंट दबो ना तो प्रथम लेखा हबो डू नॉट राइट 243 सी फर्स्ट यू राइट 243 आई क्वेश्चन पचाची फिस्कल डिवोल्यूशन तो करी आगो हम स्टार्ट करू 243 आई 243 आई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमिशन recommends the distribution of financial resources between state and panchayats solve start about 243 आई this is answer writing style demand करची कोन फिस्कल डिवोल्यूशन नो अथॉरिटी जे रेकमेंड करिवो सुची स्टेट फाइनेंस कमिशन एसएफसी इज 243 आई जदी मन नै ताले मन रखी जा पंचायत राज जो क्वेश्चन पढ़िबो 243 आई प्रथम पॉइंट स्टेट फाइनेंस कमिशन 243J allows the allocation of funds from state and central government to panchayats based on recommendation of SFC 243I 243 एक क्वेश्चन टाको मन देखि तू जा धर फिस्कल डिवोल्यूशन पढ़िबो पंचायत राज पढ़िबो इंट्रो हमर हेई कि अछि तापर जहा पार्ट थिबो से पार्ट टाकू से लाइन लेखा हबो जस्ट इंट्रो परे तापर नेक्स्ट हेडिंग ता दिया हबो जेमति एठी हेडिंग होछि कार प्रोविजंस ऑफ फिस्कल डिवोल्यूशन रो 243 आई तापर 243 जे तापर हम कहिबु कंपोजिशन 243 सी मु केमति मन रखली सी फॉर कंपोजिशन मोर मते राति रे उठी पछारिबु कंपोजिशन ऑफ पंचायत राज मु तो उठी कहबे 243 सी फॉर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पंचायत तार तीनटा लेवल अछि
एते लेखिया दरकार नहीं सीधा लिखियो 243C कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ पीआरआई एतरे कोन तापर तो बोते हाइफन रेजिंग रेवेन्यू टू मैनेज एसेट्स एंड कलेक्ट टैक्सेस सो फिस्कल डिवोल्यूशन कथा कहूची ना फिस्कल कथा 240C रे भी अछि फंक्शन में तो तारा अच्छी ना रेज रेवेन्यू मैनेज एसेट्स एंड कलेक्ट टैक्सेस तले एक एटा को कम करबो ना हमें लिखि परे कॉन्स्टिट्यूशनली एटा हमर सल्ला तापर कोन तापर तो कहितली मुई ने सेंटर आउ स्टेट अरे दे आर पेइंग सॉरी गिविंग यू मनी राइट नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल ट्रांसफर हमर एतिरे सल्ला काम फर्स्ट पार्ट इज डन नेक्स्ट कम टू द सेकंड पार्ट एक्सटेंट ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी अब कोन करी मो आउ गोटे हेडिंग देबी एक्सटेंट ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी इंट्रो देथली प्रोविजंस लिखली 243I J 243C तापर कोन करी ना स्टेट भी दोची सेंट्रल भी दोची जोटे कि हमें जानिछु तापर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सटेंट ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी को मो गली गोटे हेडिंग देली हेडिंग दे ताकू अंडरलाइन कली माने से एक्सटेंट माने केते मात्रा रे अछि तोर फिस्कल ऑटोनॉमी पीआरआईज रो एक्सटेंट केते माने हाउ केते मात्रा रे अछि हमें जानिछु जस्ट अगर मु कहितली ना लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी यस और नो फर्स्ट पॉइंट लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी example like UP and MP even in Odisha UP and MP very limited administration and political capacity second कोना ना in just think and write that's it खाली भावे और लेख inequitable distribution of funds माने कोना विलेज को कम टका आछि ताठो टिके बेसी टका आछि इंटरमीडिएट को ताठो टिके बेसी टका आछि डिस्ट्रिक्ट किंतु प्रकृतर हल कथाटा उल्टाटा तीनटा लेवल रे अछि ना we need to address the concerns of the village first किंतु हमर एठी उल्टाटा आइ जाउछ so inequitable distribution of funds more dependency on the grants and transfer माने याको पाखरे निजर फंड रेज करयार याको पावर ही मिलनी इवन लोकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन ता ऊपर भी याकर किछि खास पावर नाही ना कर सब जिंस more or less ajika date today's dates more or less panchayat raj institutions are more dependent on that of the central government schemes than that of the state government schemes clear just think fiscal autonomy ro extent pachachi extent kete achi na limited achi sir inequitable distribution of fund hoji sir grants and transfer upare dependent hegi boschi सबु मस्त कथा होची स्टेट फाइनेंस कमिशन रो recommendation को implementation भी होनी सर fragmentation of resources and accountability issues माने गोटे काम पई की स्टेट गवर्नमेंट रो गुडाई स्कीम अछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो गुडाई स्कीम अछि and you have seen this स्टेट गवर्नमेंट अलगा टका दोची ता पई की अलगा कॉन्ट्रैक्टर अछि सेंट्रल गवर्नमेंट अलगा टका दोची ता पई की अलगा कॉन्ट्रैक्टर अछि धर स्टेट गवर्नमेंट कहिछि रोड बनाओ सी आसी की रोड बने दोची आउ तापर सेंट्रल गवर्नमेंट आसी कहूची ए रोड साइड नळाटा खोल सी आगो रोडटा खोली दोची नळाटा को बने की पळौची रोड हमर कहला ना फाइनली खोलाइला माने किछि दिन तळे रोड नथिला रोड हैला गवर्नमेंट रो फंड रे आउ गोटे गवर्नमेंट रो फंड आसला से रोडटा को कोकला ना ताडी देकी पळिला बुझियोची ताको विचार कोन ना कोन ना फ्रैगमेंटेशन मनी जदि एका संगे आस्थांता गोटे भलो बातटे काम हेई परथांता ये जे रोड बनेइला सी तार अकाउंटेबिलिटी देखै देला ये जे रोड ताडीला सी भी तार अकाउंटेबिलिटी देखै देला जदि हम ठीक रे देखिबु दी जनकर अकाउंटेबिलिटी कोठी को आरे किछि हैला नाही एंड ऑफ द डे द मासेस आर स्टिल सफरिंग एग्जांपल टा लिखि परिबुनी एग्जांपल टा एथि पेन जल्दी एग्जांपल टा तू लिखिउ जदि एसे रे पढिला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऊपर ताहाले मु कहली एटा बुझियो जे एनी डाउट इन दिस एक्सटेंट पचाची बुझपल तो केते एक्सटेंट अछि ता पाखरे जदि भी पढिनो ताले सेठी भाबी की भी लिख परिबु तू बुझेला
or you want me to repeat? This is paper 2. बुझियोची now tell me rest is okay. Measures सेठी जहाँ मु तुमको प्रोब्लेम कहली किछि भाबे ने तार उल्टा उल्टा लिखे अछि सर पंचायत पाखे टंका नथिला ताले इंक्रीज लोकल रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी ना केमती ना मोर पावर टू लिवाई टैक्सेस यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी अक्रॉस स्टेट्स केमी थाउ तू छाड़ दे खाली एई वर्ड लिखि आस ऊपर वर्ड नहीं कि समय नहीं जदि स्पेसिफिकली क्वेश्चन पड़थांता ताहले कहिथा तापर ना सर स्टेट फाइनेंस कमिशन नो इंप्लीमेंटेशन होनी ना स्टेट फाइनेंस कमिशन नो रिकमेंडेशन तक इंप्लीमेंट हवा कथा तो हबो न तू छाड़ तू खाली लिखि आस एंश्योर इक्विटी इन टैक्स एलोकेशन ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग हवा कथा कैपेसिटी बिल्डिंग हवा कथा जस्ट राइट इट एंड कम बैक एग्जांपल्स एठी पूरे अछि examples put as your examples as you I'm saying you on record take few of the national players model answers ताको पढ़े ताको लेके साइड रे ताको आनी एठी लेके that's it this is general studies absolutely easy और facts and figures ऊपर मैं more or less ଗୋଟେ class भी नहीं दी and hence that would be given. Let's come to the question 5. Now tell me, discuss the significance of Article 3. You should be aware about Article 2 and 3 in a very vivid and lucid way. Now this question is on Article 3, not 2. Discuss the significance of Article 3 of Indian Constitution in the context of territorial reorganization. Question नहीं कोई दला. Article 3 of Indian Constitution in the context of territorial reorganization and its implication for federalism. Now, every one of you say me, most of you had got a wrong intro. Tell me what would be the introduction of this question. The question is not only on Article 3. It is not only about territorial reorganization. It is also about implications on or for federalism. Federalism part टा तमे introduction रे लिखलियोनी काहेकि introduction माने होची एया कि तमरा आगु को आंसर टा एया हबो आंसर रे तमे जहा जहा एड्रेस करिवो मोर और लेस introduction रे तार किछिटा झलक देबी मु सेठी ताकू देबी मुबा इंट्रोड्यूस करूची नि जोगु मुझे तो तुमको इंट्रोड्यूस करेगी कौन तो बट कहबी ये पढ़छि से पढ़छि या कथा संग बापा या करते सेकंड दिस दैट एंड ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट रे समस्त मिस कला implications for federalism. Now tell me, think and send me the intro now. Discuss the significance of Article 3 of Indian Constitution in the context of territorial reorganization and its implication for federalism. Sir, sir, intro could be India is a state. India is a union of states having the indestructible union of destructible states. Okay. So I first I use for the intro. Sir. Federalism का गला territorial reorganization भी है. सही. सर इंट्रो पढ़े अबे सेटा खाली गोटे फ्रेज टे हला आर्टिकल 3 टा दउनी आर्टिकल 3 क्वेश्चन अछि सही है आर्टिकल 3 ऊपर क्वेश्चन अछि अरे आई हैव टू राइट इट मु तो लिखी भी इंट्रो रे कारण आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन करे रे मो पाखरे बॉडी रे स्कोप भी नहीं जा करबी इंट्रो रे ही कर देबी एटा को आगो को सिग्निफिकेंस देखिबे ना आर्टिकल 3 अबाउट व्हाट तू जो फ्रेज कहले तब लिखियो ना यस तापर आर्टिकल 3